So yes, the latest in the curious case of Hardik Pandya is that the NCA has designed a special 18-week program for the star all-rounder to recover from his freak injury he picked up during the World Cup. 4.5 months from now means he is set to miss important series like the one against South Africa, England and Afghanistan, and then get ready in time for the IPL. Is it IPL over international cricket for the star all-rounder? We'll discuss that and more in this session on Off the Pitch with Ankit on India.com. And to do that, let me just introduce you to my panelists. So we have Sunny joining us at this point of time. We also have Archit joining us, and making his debut on Off the Pitch with Ankit, we have Gaurav Ghosh, who's a cricket enthusiast hailing from Kolkata. So without wasting any time, I'll start with you, Gaurav. So Gaurav, you see, I mean, this is a pattern, right? We are seeing a kind of a pattern where international stars are preferring, IPL, like the T20 leagues, the foreign leagues, over international cricket. Hardik Pandya is not the only Indian to have done that. Many others are doing it. So do you see a pattern in this, Gaurav? So I think the most important thing is what people don't understand is that IPL is now currently one. I think it's in the top five, the most valuable league in the world. It is number two. It is number two. Okay, so the in terms of so the problem is that whenever this kind of decision is comes to fruition, uh, there's a lot of stake. The franchisee pressure and all that stuff comes to the front. So it's a very unfortunate thing which is happening that obviously Indian cricketers are making active decisions, and the problem is more than that. I think that the board is also designing their series is exactly according to the IPL. That is also creating another layer of problem. And Hardik Pandya has been doing this for a very long time, but I don't think Hardik Pandya, Indian team would have been very much balanced test side if Hardik Pandya was playing test cricket. No, But because Gaurav, of let me just correct you. Let me just correct you. Let me be the devil's advocate over here and correct you. yeah, See, nobody picks up an injury. Nobody wants to pick up an injury. An injury yeah, happens. And number two is the fact that, Gaurav, in the past, Hardik Pandya had a back injury and he yeah, recovered from that, and then he came to the World Cup and all that. In the World Cup, what exactly happened was the fact that the injury that he picked up was quite freak in nature. It was a freakish injury. yeah. You can also call it an accident. तो ये किसी के भी साथ हो सकता है. But what I find very fishy over here is the fact that the 18-week special program, the timing. 18 weeks means 4.5 months, which means you are just recovering in time for the IPL. Now, my point is IPL that important? Because okay, fine, you recover and all that. You don't have to play the entire duration of the IPL. You can skip a few matches so that you're fresh for the T20 World Cup. That should be a priority, right, Gaurav? But don't you think that a franchise like Mumbai Indians, they bought him for a very specific reason that he's probably the next captain in line. They have done the amount of work that they have done just to see that he's not playing. It's not logical. I mean, So it what you're we what are you're trying fans. to say, Gaurav, over here is the fact that it's business over cricket. Cricket takes a It's backseat, always the game, right? it's look. I think go to football and you will always see that this is it's an unfortunate thing for us like you cricket fans, but it's happening. But when you're talking about something which is so big as IPL, especially compared to bilateral series without any consequences to the normal Indian cricket fans. If you go to any Indian cricket fans, they will follow IPL over India South Africa Test match. This is how the situation is, and that has been a pattern that has been quite evident for a last, I don't know, maybe 4 years. Look at for Bumrah, for he never played a Test cricket in India. So I just want to ask अर्चित देखो यहाँ पर ना हार्दिक पांड्या के साथ जो सिनारियो है, ये जो 18 वीक का स्पेशल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये लोग भी पहले कर चुके हैं ये 18-month program. And then you saw the way Bumrah came back in the World Cup. He was damn good. And then you also saw a KL Rahul, the way he came back in the World Cup. And even Shreyas Iyer, for that matter, went through this 18-week program specially designed by the NCA. Right, Archit? So
बट स्टिल माई पॉइंट ओवर हियर इज ऑल दैट इज ओके, बिकॉज हमें याद है जब श्रेयस अय्यर का ये स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, या फिर केएल राहुल या फिर बुमराह का स्पेशल प्रोग्राम चल रहा था, हम चर्चा तब ये करते थे कि विल बुमराह, क्या बुमराह के पास वही पेस रहेगा इंजुरी के बाद जब वो वापस आएंगे, क्या वो उतना ही फिटनेस मेंटेन कर पाएंगे? बट एज वी सॉ दे केम आउट, दे इमर्ज्ड एज वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो आपको क्या लगता है ये 18 वीक का जो प्रोग्राम है ये कुछ ज्यादा ही लंबा है या फिर ठीक है, looking I at the think longer run? right. So basically, when you're as injury prone, I gotta agree with Gaurav here in some regard, I guess. Uh, जब आप हार्दिक पांड्या और बुमराह जितने इंजरी प्रोन होते हो, यू हैव वेरी लिमिटेड क्रिकेट इन यू. आप बहुत यू वांट टू मेक यूज अर्चित ऑफ. एक पॉइंट मैं कर दूं, एक पॉइंट मैं यहाँ पर रख दूं, बिल्कुल बिल्कुल. इंजुरी प्रोन आई थिंक इज द रॉन्ग टर्म यू आर यूजिंग विथ हार्दिक पांड्या। देखो इंजुरी प्रोन अलग चीज होता है, इंजुरी प्रोन मतलब आप हर बार इंजर्ड हो जाते हो और आपका एक ही बॉडी पार्ट इंजर्ड हो जाता है। हार्दिक पांड्या का इससे पहले जो इंजुरी था वो बैक इंजुरी था विच वॉज करियर थ्रेटनिंग, ठीक है, बट देन ही केम बैक फ्रॉम दैट एंड नाउ द इंजुरी दैट ही हैज पिक्ड अप इज अ फ्रीक एक्सीडेंट। No, तो ये that तो is इंजुरी प्रोन बोलना इज क्वाइट, आई थिंक, आई मीन बेकार का, आई मीन देयर इज नो पॉइंट सेइंग दैट हार्दिक पांड्या इज इंजुरी प्रोन, बिकॉज अगर स्टैट्स देखा जाए पिछले 3 सालों में इंडिया खेला है 55 T20 मैचेस जहां पर हार्दिक पांड्या ने 38 मैचेस खेला है। तो अगर But there were a रेगुलरिटी का lot of बात कर matches रहे हो where, then but there were just, sorry for barging in, but a lot of matches where Hardik Pandya didn't play as a bowler. He didn't bowl. yeah. He I would get play your half an point, but innings he and he was would there just in the leave. team. But he was there in the team. And if you are questioning Hardik Pandya, Gaurav and Archit on this subject, then why not question a Rohit Sharma and Virat Kohli? ये लोग तो अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं, मुझे ब्रेक I चाहिए, don't think I I need to go questioned for a Hardik. I don't think हाँ. I questioned Hardik. I said that whenever it's not a player who is making this decision, it's a board that Exactly. made a very specific decision that this kind of players I will So do use you think that for so my IPL. counter question is, Gaurav, do you think the board is working very closely with the IPL franchisees? Of That course, has to be the case. That has it's to be board. the case. Again, we are talking Board is about what made this IPL so successful, you know. yeah. It's not I because mean, of this board. BCCI. Yeah. And specifically, if you see from this board's action, it's always been commerce first. It's all Of about course. what we are making money, what we are doing it. They will look, they understand that the fans' emotions are with the World Cups. So whenever Exactly. Hardik Pandya plays in the World Cup, everybody is fine. So nobody will tell you that Test cricket में IPL में Test cricket में हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेला, साउथ अफ्रीका में मुझे हम लगा सिक्स गौरव मुझे लगा फाइनल्स में हार्दिक पांड्या का कमी खला व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई फील दैट डे वी नीडेड एन ऑलराउंडर इन हार्दिक पांड्या। व्हाट डू यू थिंक again, I mean, गौरव? final is a different topic. Final, I have a different opinion on that. But the problem, I think what I kept on saying is that it's an active decision made by the board. If you see that, think about it. A team like a management like Mumbai Indians bought an injured player. Right now, he's an injured player. Right? They don't know whether he will be available for IPL or not. They bought him from Gujarat Titans, where he was the captain for no reasons. And now, if you tell them that no, you know what, he's maybe injured. We will make him play Test cricket and And or in or a series in South Africa, and we will not feature him. They will not accept it. It's not possible. It's not just only that the commercials and everything. So IPL is not just only cricket. IPL is a lot of things. वो एब्सोल्युटली। तो गौरव सनी यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं दैट बीसीसीआई ने, मतलब मुंबई इंडियंस पहले उनको गुजरात टाइटंस से लेने से पहले दे मस्ट हैव हैड अ वर्ड विद द एनसीए पीपल and found out कि भाई कितने दिनों में this guy will recover, what's his status right now, the health status and all that, and once they got confirmation from these guys from the NCA, only then I feel they went ahead and they purchased Hardik Pandya. सनी आपको क्या लगता है, ये तो backdoor talks हुआ ही होगा? अंकित, नॉट ओनली विद एनसीए, ऑब्वियसली उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ भी बात करी होगी। तुम हार्दिक पांड्या को खरीद रहे हो तो उसके साथ भी बात करी होगी। और अभी जैसे इन्होंने, आप कह रहे हो कि आप इंजरी प्रोन वाले वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, हार्दिक पांड्या ने टेस्ट मैच खेलना छोड़ दिया। इंडियन टीम को जिस exactly. बैलेंस की जरूरत है, मुझे क्या लगता है अगर हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर टेस्ट टीम के अंदर जाएगा तो वो बैलेंस इंडियन क्रिकेट True. टीम को मिल जाएगा। डब्ल्यूटीसी फाइनल में हम 2 बार गए, दोनों बार हम फाइनल में जाके हारे हैं।
फाइनल में, अभी आपने बोला वर्ल्ड कप फाइनल में हार्दिक पांड्या होना चाहिए था, तो मुझे लगता है WTC फाइनल के अंदर भी वी नीड अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या। और अगर हार्दिक ट्रू। पांड्या एक तरफ देखते हैं कि मुझे कैप्टनसी करनी है, एक तरफ वो 10 मैचों से गायब हो जाते हैं, फिर उसके बाद आके वो दोबारा कैप्टनसी की कोशिश करते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी भी कैप्टन को उठा के देखोगे, रोहित शर्मा की जब से कैप्टनसी आई है कंसिस्टेंट है। इंजरी को लेकर रोहित शर्मा बाहर नहीं हुए, विराट कोहली इतने कंसिस्टेंट थे अपनी कैप्टनसी को लेकर। और दैट इज द रीजन सारे क्रिकेट बोर्ड्स देते हैं कि हम बॉलर्स को कैप्टन क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी का इशू आता है। और हार्दिक पांड्या के पास जो दोनों चीजों की पावर है, बॉलिंग कर सकते हैं, बैट से अच्छा खासा हिट कर सकते हैं, तो ऐसा ऑलराउंडर ढूंढना अभी BCCI के लिए मुझे लग रहा है काफी टफ हो रहा है। ऐसा एक और ऑलराउंडर टीम इंडिया को मिलना चाहिए। और अगर हार्दिक पांड्या को इतनी ज्यादा इंजरी है तो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लो यार, IPL ही खेलो फिर उसके बाद। उम्मीद क्यों जगा के बैठे हुए हो कि हाँ ठीक है हार्दिक पांड्या भी टीम के अंदर है, 4 मैच आप खेलोगे वर्ल्ड कप की जैसी लीग के अंदर, उसके बाद आप बाहर हो जाओगे, IPL का पूरा टूर्नामेंट खेलते हो। पैट कमिंस को देखा, डोमेस्टिक क्रिकेट हम्म। एकदम छोड़ दिया उन्होंने, वर्ल्ड कप के लिए पहले ही तैयारी करी। इंग्लैंड को देखा, इंग्लैंड ने पूरा डोमेस्टिक खेला, अपनी ODI जो टीम थी पूरी T20I में बर्बाद कर दी, और वर्ल्ड कप के अंदर मुंह की खा के चली गई इंग्लैंड। ये सेम चीज इंडिया के साथ हो रही है। हार्दिक पांड्या को हम लेके जाते हैं फुल फुल फ्लेजिट ऑलराउंडर बना के, आधे मैचेस में वो रिटायर, आधे मैचेस में वो इंजर्ड हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए। अगर शमी ऐसी बॉलिंग नहीं कर पाता तब क्या होता? अगर हार्दिक पांड्या की इंजरी के बिल्कुल। बाद ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, ठीक है, शमी की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, अगर शमी बॉलिंग नहीं कर पाता तब क्या होता? एक तो और अंकित रिजर्व ये बहुत BCCI को भी नाइव रखना होगा पड़ेगा। कहना कि पैसा या फिर बोर्ड या फिर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, ये क्रिकेटर्स भी इंसान होते हैं और इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स, अब आपने देखा आप सीरीज नहीं खेल Ankit, रहे हैं। Ankit, Ankit, if we are talking about the financial security, there are people who are dying in borders। और क्रिकेट को इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं उसी तरीके से माना जाता है, जैसे लोग आर्मी वाले होते हैं, ऐसे इंडिया में क्रिकेटर्स लोगों को भी इज्जत दी जाती है, क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेटर्स को भगवान माना जाता है। यहाँ पे यू आर लिविंग इन इंडिया, यू आर नॉट लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे पैर रख के बैठ जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर ऐसा होता, रोहित शर्मा ये सेम काम करते, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे क्रिकेट को इतना ज्यादा फील से देखा जाता है, खेला जाता है, आपने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे, पूरा स्टेडियम ब्लू था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको ऑस्ट्रेलियन ऐसे होंगे जो काफी सारे विराट कोहली के फैंस होंगे, विराट कोहली की जर्सी पहन के वहां बैठे होंगे, ऑस्ट्रेलियंस होंगे। इंडिया के अंदर ऐसा हो गया तो इंडिया के फैंस ही उसे स्टेडियम से बाहर भगा देंगे, उसके साथ गलत व्यवहार कर देंगे। दैट्स व्हाट आई फील। तो ऐसे देश के अंदर रहकर हार्दिक पांड्या अगर डोमेस्टिक लीग खेले तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। छोड़ दो इंटरनेशनल क्रिकेट यार, पैसा ही कमाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, IPL है खेलो, 2 फ्रेंचाइजी को लीड करो, एक छोड़ो। बट इसका But आंसर Sunny, वही है don't you सनी, जो आप think? कह रहे हो वो रिप्लेसमेंट अभी हमारे पास है नहीं हार्दिक पांड्या के। वो शार्दुल अर्चित ठाकुर में वो रिप्लेसमेंट, देख रहे थे अर्चित अर्चित बट वो अर्चित मुझे इम्पैक्ट नहीं ला लगता है पा रहा। अर्चित मुझे लगता है हमने रिप्लेसमेंट कभी हार्दिक पांड्या का ढूंढने की कोशिश करी ही नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर रिप्लेसमेंट बहुत इजीली मिल जाएगा। लास्ट लास्ट जब हमारी बात हो रही थी तो यू जस्ट सेड कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट इजीली मिल जाएगा। Especially with the advent of Okay, so impact I players, have Hardik Pandya is a player will not come. Gaurav, please hold your thought. I've got a counter for Sunny over here. Sunny, you're talking about the fact that we are a nation which has a huge population and finding the next Hardik Pandya. आप यही आपका बात है ना? Sunny, देखो, when Kapil Dev happened in 1983, we were looking for the next Kapil Dev, and it took us at least 2.5, 3 proper decades to find the next Kapil Dev. Now, Hardik Pandya is one of his kind, you see. You cannot find another Hardik Pandya. We thought Shardul Thakur is like for like, horses for courses and all of that. But that does not happen. Hardik Pandya jo impact lata hai, it's impossible for somebody else to get it. Hardik Pandya is one in a generation cricketer. Please understand, jo bat se bhi match jita sakta hai, ball se bhi. And he's not a spinning all-rounder. He's not a spinning all-rounder like Ravindra Jadeja. He's a fast bowling all-rounder. And being an Indian and a fast bowling all-rounder is a rarity. So Hardik Pandya belongs to a rare breed, Sunny. Sunny, you want to say something? You had your hand raised, please. बट अंकित, एज यू कैन सी, हार्दिक पांड्या जब अपने अर्ली स्टेजेस में था, BCCI ने उसे बहुत ज्यादा ग्रूम करा है। और ऐसे हम किसी और प्लेयर को लेकर आएंगे डोमेस्टिक लीग से उठा के, उसे हम थोड़ा ग्रूम करेंगे, ग्रूम करने के बाद ऐसा एक और प्लेयर हमें मिल सकता है। आई डोंट फील कि हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर नहीं मिल सकता। अगर हम ईमानदारी से एक प्लेयर ढूंढेंगे डोमेस्टिक लीग के अंदर, इजीली एक प्लेयर हार्दिक पांड्या ऐसा हमें मिल जाएगा। दैट्स व्हाट आई फील। अभी युवराज सिंह की लोग कमी बोल रहे थे, युवराज सिंह की कमी पूरी नहीं हो पाई, उसकी जगह तिलक वर्मा आया। तिलक वर्मा को आप देख रहे हो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। BCCI थोड़ा और ग्रूम करेगा तो तिलक वर्मा विल बी द फ्यूचर। उससे पहले शुभमन गिल ओपन कर रहा है, अच्छा स्टार्ट दे रहा था, उसे स्टार्टिंग में मौके नहीं मिले, अब शुभमन गिल को मौके मिल रहे हैं। देख लो, शुभमन गिल ओपनिंग स्लॉट के अंदर शिखर धवन से ऊपर आ गया। शिखर धवन खुद आके बोल रहा है कि मेरी जगह शुभमन गिल को खिलाना चाहिए। हार्दिक पांड्या कैप्टनसी की तरफ भागते हैं, लेकिन कैप्टनसी करने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अंकित, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर को अगर आपको कैप्टन बनाना है तो उसे कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से टीम चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मैच के अंदर हार्दिक कैप्टन है, एक में सूर्य कुमार कैप्टन है, एक में बुमराह को कैप्टन बना रहे हो, फिर सिराज को कैप्टन बना रहे हो। मजाक थोड़ी ना चल रहा है अंकित। कैप्टनसी चल रही है, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टनसी चल रही है, एंड वी आर द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड। तो हमें एक एक सर्टेन रेपुटेशन है जो हमें अपनी मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी। I मैं एक think चीज इसमें ऐड everybody, I करना think चाहूंगा एक सनी minute, को एक एक minute, चीज। एक minute, एक minute, एक minute. I think everybody has a counter for Sunny. भाई आराम से, Sunny भी इंसान है, थोड़ा आराम से. Give him some time to breathe easy. Gaurav, I saw your hand go up first. Gaurav, continue. Archit, I'm नहीं, coming to you. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है कि ये जो हो रहा है, ये जो पूरा जो हार्दिक पांड्या एपिसोड हो रहा है, दिस इज नॉट डन बाय हिम. The top management has a clear communication with him. It shows like a pattern. It cannot happen like that. We're talking about 17 crores. This is a lot of money. Pura PSL No, no, 17 crores. Gaurav, we have discussed that. We have Yeah. discussed that there must So, have been talks that have happened yeah, backdoor. so what I'm saying is that Hardik Pandya replacement is concerned. Look, first of all, Indian cricket, in terms of how big and how resourceful it is, nothing is impossible. But right now, and if you see, the Indian team management is also moving away from Hardik Pandya's captaincy because of they are putting continuously. आप देखेंगे कि because of वो लोग 4-1 जीता है सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी से. अभी आपको फ्यूचर में थोड़ा बहुत सूर्य कुमार यादव पे वो लोग फोकस करेंगे. ए इज ए बैट्समैन Arey, एंड बी ही Ajay विल बी Jadeja, Ajay Jadeja. Gaurav, Ajay Jadeja made a statement yesterday where he said that forget about Rohit Sharma and Hardik Pandya, make Surya Kumar Yadav the captain for this नहीं, season इंडिया में for तो अभी Mumbai अभी Indians. सब अभी सब अच्छे कैप्टन हो जाएगा बिकॉज सब होगा. वो बात नहीं है. हार्दिक पांड्या is made a very active decision after his injury that he will play like this. He understood and he never showed any kind of interest in टेस्ट क्रिकेट के ऐसा करेंगे. हम लोगों का रिक्वायरमेंट है. And he also understands, like all of us, for Indian fans, everything is about World Cup and big events. As long as he plays in the big events, we are happy. And big event is also a test match, Gaurav. And we feel For Hardik for Pandya for is a no- also. for you and me, for a normal Indian cricket fan, if you just go and ask normal के वो इंडिया No, no. पूरा डिप्रेशन में Gaurav, चला गया बोलता tell मर you गया. what I feel since Kohli gave up captaincy and while the time Kohli was there, Kohli made one thing very clear. Kohli said that test matches have to be our priority, and that is probably one of the biggest reasons why test cricket has become popular over the past 3 or 4 years. Archit, you had a point. Please go ahead. हाँ, एक तो मैं अग्री नहीं करता. आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या इज द नेक्स्ट कैप्टन. द वे ही बॉल्स इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिज लोअर बैक. आई डोंट थिंक Archit, ही विल बी प्लेइंग कंसिस्टेंटली. Do you think Hardik Pandya is a lucky captain? ये बोलना जायज है या फिर मैं गलत हूँ? Hardik Pandya is a he lucky captain. he is the Titans में he captain had a stack because team. we He have had a very good team. limited choices. Yeah, he's a captain right now because there is no other option that is better than him. और दूसरी बात की हार्दिक पांड्या, जैसे गौरव ने कहा है, अग्री विद हिम, कि जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको आप स्पॉटलाइट दो, वो परफॉर्म करते हैं. हार्दिक पांड्या लव्स दैट स्पॉटलाइट. ही लव्स टू परफॉर्म इन दोस बिग मैचेस. आपने एमसीजी में देखा. और सनी की एक बात मैं बोलना चाहूंगा, वो कह रहे हैं हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर ग्रूम कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. वो एक्सपीरियंस लाना मुश्किल है. जो इतने साल उन्होंने कोहली और धोनी और इन सब प्लेयर्स के साथ उन्होंने Experience और स्पेंड वो करे. natural नेचुरल ability भी एबिलिटी. कुछ लास्ट होता ईयर है. आपने एमसीजी में देखा, उन्होंने स्ट्राइकर पोजीशन से उन्होंने कोहली के सामने खड़े होकर जो मेंटल प्रेजेंस दिखाई गेम में, जो उन्होंने कोहली को, उन्होंने बेसिकली हौसला उनकी दिया, एबिलिटी को, हाँ, एबिलिटी को हौसला उन्होंने दिया, पुश किया भरोसा कि दिया भाई कि कर this करो. can be done. तो ये I चीज think हार्दिक his पांड्या bowling की चाहिए ability, नेचुरली. that's नेक्स्ट प्लेयर्स differentiates. में लाने के लिए टाइम लगेगा. I think ये his ग्रूम bowling नहीं करा जा ability सकता, ये differentiates एक्सपीरियंस him. से ही आता है. You will have बट hitters who can बट bowl little bit, बट but बट to बट गौरव to take गौरव एंड wickets अर्चित like that. बट गौरव गौरव एंड अर्चित, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. जब हार्दिक पांड्या इंडियन ये नेशनल कैप पहना था हार्दिक पांड्या ने, तो ही वाज द प्लेयर जिसे सारे फॉर्मेट खेलने थे. बीसीसीआई ने उसे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे दी, कैप्टन बना दिया, इतनी ज्यादा लाइमलाइट मिल गई. आज के टाइम पे वो अपनी मनमानी कर रहा है. वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा. टेस्ट वो क्रिकेट इसलिए क्यों नहीं नहीं, खेलना नहीं हार्दिक सनी, आई पांड्या थिंक को? दैट्स रॉन्ग. आई थिंक दैट्स रॉन्ग. वो टेस्ट क्रिकेट में 10 12 15 ओवर डालना, वो दैट्स नॉट इज, दैट डजंट कम इन हिज एबिलिटी. ही कैन, I what वो I Ankit, Archit, हैरिस what I स्टॉक की feel तरह वो is 4 ओवर Archit T20 में. टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैं 12-15 ओवर की बात नहीं कर रहा. तुम्हारे दो बॉलर लगे हुए हैं, मान लो बुमराह और शामी लगे हुए हैं. उन दो बॉलर्स के साथ तुम्हें एक तीसरा पेसर लेकर आना है.
हार्दिक पांड्या को लेकर आओ, 4 ओवर डलाओ हार्दिक पांड्या से, दोनों बॉलर्स को रेस्ट मिलेगा, उसके साथ एक स्पिनर लगाओ, फिर दोबारा दोनों पेसर्स लगाओ। आई थिंक मैं ये उसके नहीं लिए बोल रहा आपने कि हार्दिक पांड्या को एकदम रेगुलर शार्दुल पेसर ठाकुर यूज करना ढूंढनी है। चाहिए। आई थिंक वो अभी आपने हार्दिक बोला कि पांड्या शार्दुल ठाकुर कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्दिक पांड्या, बट हार्दिक पांड्या नहीं, ऐसा हिट करना हार्दिक, इन टेस्ट इससे मैचेस पहले ही कैन आपने स्पिन ओवर एक्सपीरियंस की 10 बात 12 करी, ओवर्स। इससे हार्दिक पहले आपने पांड्या कैन नॉट। एक्सपीरियंस की बात करी, इससे पहले आपने एक्सपीरियंस की बात करी, तो एक्सपीरियंस शार्दुल के पास नहीं है। और एक्सपीरियंस से मैं एक और चीज बोलता शार्दुल हूँ, का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल आपने के देखा पास भी ना नहीं था। सीरीज में। शार्दुल उस टीम का पार्ट थे वो जो जिता के लाए हैं आपको 56 और वो वॉशिंगटन ठीक है, सुंदर वो के ठीक साथ। है, फेमस फेमस गैबा विन, वो ठीक है, वहां पे कोई और नहीं बचा, शार्दुल ठाकुर चले गए। लेकिन अगर अर्चित आप बात कर रहे हो एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस तो किसी के पास भी नहीं था। जिसने डेब्यू करा उसके पास एक्सपीरियंस तो किसी के पास नहीं था। आप हार्दिक पांड्या के देखो पास भी आप तो धीरे मिक्स धीरे कर रहे हो एक्सपीरियंस आया चीजों ना। को। टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे हम, T20 और हम एमसीजी की लास्ट ईयर की बात कर रहे थे जहां एमसीजे वो लास्ट ईयर T20 की, मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट था। टेस्ट क्रिकेट में हार्दिक पांड्या तो आई वुड नेवर पिक हार्दिक पांड्या ओवर शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर कैन प्ले फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 5 दिन वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं फील्ड पे। हार्दिक पांड्या तो प्रीटी श्योर ही कैन नॉट सर्वाइव 2-3 days ऑफ टेस्ट क्रिकेट नाउ। और ये चीज उनके व्हाट काइंड ऑफ फिजियोस और उनके एथलीट ही मेडिकल इज, स्टाफ। व्हाट काइंड ऑफ एथलीट ही इज, अगर आप ये बोल रहे हो कि वो 4-5 दिन परफॉर्म नहीं कर सकते, व्हाट सॉर्ट ऑफ Yeah, I एथलीट ही think इज। Test cricket takes a different kind of quality. It's not just only राइट। about physical; it's यू कैन also टेक अ लुक ऑन mental. देख मैं विराट कोहली। पुजारा T20 नहीं, T20 में परफॉर्म नहीं कर सकते, मयंक अग्रवाल No, T20 में how नहीं कर many? सकते। I mean, it's. I think even Ben Stokes doesn't bowl. Ben Stokes is not an all rounder anymore. He ट्रू। bats most. He's a ट्रू। batting all rounder. He has become in Test cricket more of a batting all rounder. If you ट्रू। see, just see the whole world. I think maybe South Africa has one batting. But again, it's a bowler who can bat. But a total all rounders like Andrew Flintoff, Hardik Pandya, who are like balanced. Like a bowlers, as a bowler they can take 5 wickets, or like Jack Collins, like bowler they can take 5 wickets, and as a batter they can score important runs. ये breed बहुत difficult है, especially in today's time where so much cricket is happening. You will find spinner all rounders in the future also. You will see that a bowler, a batsman who can bowl, like Washington Sundar is already in the ranks. He's a आई थिंक द fantastic फैक्ट ऑफ batsman. द I mean, मैटर इज ये बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स व्हेन यू आर 36 एंड यू नो, अब आपको सब लोग बता चुके हैं कि आप ये कर सकते हो, इतना ऑप्शन है, इतने ओवर्स डालने हैं साल में, इससे ज्यादा नहीं डालोगे तो यू। अब even even हार्दिक पांड्या even के even ऊपर that ऑफ। goes for Bumrah. I don't think he will be. या You will. एग्जैक्टली। I want him to bowl Test cricket because he is, according to me, the person who changed Indian cricket from Asia Cup. Gaurav, I feel at the end of the day, the player, that is Hardik Pandya, the player in question, Hardik Pandya, I think he knows his body best. And I think Hardik Yeah, I Pandya think has he realized decided. I think there's a clear communication between him and the team. He is not. Hardik He will Pandya not has be even realized, like. Hardik Pandya has realized, Hardik Pandya has realized that white ball cricket is the future. Test match cricket is not going to get him anywhere. He wants to extend his career now. अगर लगता है कि 5 साल और खेलने वाला है, उसी 5 साल को वो 8 साल बनाना चाहता है by not playing test cricket and remaining fit. In this session, we got a fair idea as to what Hardik Pandya may be thinking, how Mumbai Indians may be thinking for that matter, and everybody else. The fans are left confused in all of this, the curious case of Hardik Pandya. But we gave you a fair idea as to what we think is actually happening behind the door. Thank you so much for joining us on this session on Off the Pitch with Ankit on India.com. Stay tuned to this website for all the latest across sports. Thank you so थैंक्स much, फॉर guys. हैविंग अस। थैंक यू।